So far we have seen that the classical physics had this trouble, that if we assume that there is a background ether that is present everywhere in the universe, and it's a medium to for the electromagnetic wave and light to propagate, then the law of velocity addition that is predicted by classical relativity, that doesn't hold. Because when several experiments were performed to find the speed of light in a moving reference frame, the speeds always seem to be independent of the motion of the frame of reference in which they were making the speed. So there were several proposals like partial ether drag, a Fresnel, Torch contraction, and other things, but none of them satisfied everything. So then, and especially because of the Michelson experiment, that speed of light seemed to be constant no matter what time of the day or time of the year you measure the speed. So it means the speed of light is independent of the speed of the reference frame. So based on these things, Einstein proposed a radical departure from classical physics, that we don't need ether for electromagnetic waves to propagate, and since there is no ether, the velocity of light should be constant for all observers that are in vacuum. So he proposed two postulates that if you use them, you can drive and explain all the experimental results that are available. So this was proposed by Einstein. They just performed the experiment. Yeah, they had an experiment and they had a result. So it's an experimental result. But they didn't raise it to a status of a universal postulate. Okay? And they didn't use it to explain different other phenomena. So, for example, Lorentz also did a wonderful job of assuming length contraction along the direction of motion in a uniformly moving inertial frame with respect to another frame. And then by that, what he did, he said, okay, Maxwell equations should have the same form in two inertial frames. And let's start from this and derive that what transformation of coordinates should be there to link the two inertial frames that preserves the form of Maxwell equations. And he derived Lorentz transformations, and they're actually true, even from the Einstein theory of relativity, we are going to do that. So that's ingenuity that a lot of people were trying to make sense of new physics. This was also a break from classical relativity, because under Galilean relativity, if you start with Galilean transformation and you apply those transformations on Maxwell equations, they don't preserve their form when they go from one frame to another frame. But these Lorentz transformations were able to preserve these forms and explain this null result of Michelson experiment as well. But and that was done actually 1903, 1904, just a year before Einstein. Now, with all this background information available there, I personally think that it was only a matter of time before somebody would raise these experimental results to the level of postulates that should be applicable to all laws of physics and everywhere in the universe. And that was done by Einstein. He said, first of all, the principle of relativity is valid. And as I explained earlier, this is a very, very old principle that just relates to our belief that laws of physics are the same everywhere and at all times. They are not new. And the second postulate, that was the departure from the classical physics, was simply that speed of light is the same for all
inertial observers in vacuum. Remember, only in vacuum. If you have, let's say, air and you are moving in yourself, you are moving, then the speed is different for you if you are standing in there. It's the same in vacuum only because there is no medium. If there would have been a medium like ether that is necessary for electromagnetic wave propagation, then the classical relativity would have been true. So, and using these two principles, he then derived Lorentz transformation, and from Lorentz transformation we can see why. So now you don't need to do any calculation to prove Michelson's experimental result to be true, because that is incorporated in the algorithm. So that's what we are going to do today. We are going to derive the transformations that link to inertial frames that are moving with respect to each other. That's with respect, O prime is moving with velocity u with respect to O. So let's use these two things to derive the coordinate transformation from one to the other. For that, let's say we take a reference like this, and this coordinate system is moving along x-axis, that both of these axes are aligned, and then so y and z axes are the same. There's no motion along y z axis. Let's say time in this coordinate system is t prime, and time in this coordinate system is t. And for a reference, when this coordinate system passes this one, and when O and O prime are at the same point, let's say we take our time reference to be 0 when these origins coincide. Just for simplicity, you can take them to be whatever, the end result would be the same. It will only be a bit more complicated in this. And let's say when these two coincided, there was some flash of light, and that flash of light began to go in a spherical wave front. So it means that after some time t, in this frame of reference, we can appreciate that this distance should be equal to this thing, right? Because it took time t to reach light from here to here, and this distance, since speed of light is c, it should be c t squared. Now for this observer O prime, the same thing is happening in this. It's not easier to say that this is moving and this is stationary, but loosely speaking, we will use in this language as we use in daily life, because that's how it's equipped. It's not equipped to actually exactly use the model physics terms. But anyway, when I say that this is moving with speed u, it means that it's moving with respect to this. It is also possible that this is stationary and this is moving in the other direction with speed minus. It doesn't matter. So the same thing is happening in this frame, that since the light pulse started at the origin, after some time t prime, it covered some distance which is x prime squared, y prime squared, z prime squared. Speed is same. This should be true in this frame, and this should be true in this frame. And the coordinate transformations should be such that they transform this into this or this into this, because they are both true in their own frame of reference. You can see the difference easily. If you were a classical physicist in the 19th century,
what you would do, you would say, okay, let's write this for this frame, but for this frame, you would intuitively write that this speed c is different in this frame because this is moving, so because of velocity addition law, this has to be some c prime, but this time is going to be the same, because time was assumed to be the same. But here there is no restriction on time and space. In general, they can be different. The only restriction is on the speed. Okay. So we have taken motion only along x-axis, so it's reasonable to assume that the other two coordinates would be the same. And since they are both inertial frames, an inertial frame is such that if a particle is moving along a straight line with uniform velocity, it continues to do so. And if they are both inertial, they should both see straight line trajectory for the same particle, which means that these transformation of x prime and t prime has to be linear. So in general, let's say x prime is some unknown alpha 1 into x plus some alpha 2 into t, and t prime is some alpha 3x and alpha 4. Our job is to find this alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 such that this one goes to this or this goes to this. With this assumption that the speed of this relative to this is u. ये जो पहली assumption है इसकी speed के लिहाज से u है, we can find a conditional coordinates right away. अगर आप इसको इस तरह से आगे करें, ये let's say the origin of this coordinate system is x prime is equal to 0. If we are in this coordinate system and we are just watching the O prime moving like this, we can see that this origin is moving with speed u with respect to this. So I can find an equation from this like this, that this x prime is, loosely speaking, इसको हम u ड्राइव कर सकते हैं, and अब इसको मैं थोड़ा सा u करके लिख देता हूँ, 0 is equal to x plus alpha 2 alpha 1 t. So इसको u करके लिखते हैं. So this must be u, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 है और इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इस सिस्टम के अंदर is some x, which is changing linearly with speed u because it's moving with speed. So essentially we have the first condition we can find the remaining three coordinates easily by substituting these two, let's say in this equation. So x prime square is this square, y square, z square, c square, p prime square from here. तो इन स्क्वायर को अगर हम ओपन करें, अल्फा 1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस अब हम इस तरह कहते हैं कि इसको इस तरह से लिखते हैं कि x y z की टर्म्स इस तरफ और t वाली उस तरफ लिख लेते हैं. ये आ जाएगा अल्फा 1 स्क्वायर, इस x स्क्वायर को भी इधर ले आते हैं, माइनस c स्क्वायर अल्फा 3 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, देन
y स्क्वायर z स्क्वायर, और इसमें एक टर्म है ये x t वाली, इसको भी लिख देते हैं 2 अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ से जो x की वैल्यू टर्म है इसको भी देते हैं माइनस c स्क्वायर 2 अल्फा 3 अल्फा 4 x t, ये जो t स्क्वायर वाला टर्म है इसको उधर ले जाते हैं c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अल्फा 4 स्क्वायर, इससे ये इक्वेशन। अब अगर हम ये लास्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इस तरह से होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये इस पे ट्रांसफॉर्म हो तो दिस शुड बी इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू वैसे ही है, दिस शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस शुड बी इक्वल टू c स्क्वायर। So you have 3 equations there, 1 equation here, 4 equation, 4 unknowns, they can easily be solved together to find alpha 1, alpha 2, alpha 3. वही आपने इंग्लिश इक्वेशन से कंपेयर किया जी, ये आपने लास्ट में हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं जो इस इक्वेशन को इसमें ट्रांसफॉर्म करे। मैंने लास्ट इक्वेशन को इससे कंपेयर किया। ये है अल्फा 2 स्क्वायर, इस बात को फॉलो करना है सब लोग कि 4 इक्वेशन 4 अननोन है। यहाँ से आप फर्स्ट अल्फा 2 निकाल लें माइनस अल्फा 1 u, इसको इस इक्वेशन में पुट करें, इस पे पुट करें, इस पे पुट करें, 3 वेरिएबल रह जाएंगे, फिर एक वेरिएबल और की वैल्यू 2 में पुट कर दें, 2 इक्वेशन आ जाएंगे, उनको सॉल्व करें और आपकी ये वैल्यूज निकालें। जो आपका नंबर में पोस्ट किया उसका ये क्वेश्चन है, इसमें आपने इसको सॉल्व करके ये चारों वेरिएबल फाइंड करना है। मैं समझे वो रिजल्ट क्योंकि देखिए x की वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, इसको थोड़ा देखिए ठीक है। ये वैल्यू तो अगर हम निकाल के ये पुट करेंगे इक्वेशन बन जाएगी x प्राइम सम कापा x माइनस u3 t प्राइम सम कापा e minus u over c where kappa is these are the equations that are called Lorentz transformation. Okay, Lorentz transformation पहले इसके ही को फाइंड करना। So this was actually one success, immediate success of the theory, and Einstein actually derived these equations in his first 1905 paper, especially the theory of evolution. At a certain instant of time, but the देखिए ये O prime जो है ना ये move करता हुआ आ रहा है, and this point, this time को तो दोनों coincide कर रहे हैं, वो हमने reference point ले लिया 0, but it's continuing like this. जब x prime 0 है, जी जी। जब x और t को भी 0 नहीं देते, x और अगर हो सकता है t prime में 0 से। असल में थोड़ा सा ना इसमें अपनी आर्टिफिशियलिटी इस्तेमाल की है। ये एक वो पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, और अगर आप u जो है वो इसमें लेफ्ट साइड पे इसमें पुट करें तो t0 x0 is also a solution of this, but that's not the only solution. At some later time t, still x prime में वो point, prime coordinate में वो point 0 है, but in the unprime coordinate it's not 0. So ये जो हमने यहाँ तक लिखा है, this is keeping it general. आप follow करें?
अगर b 0 पे इसको पुट करूँ तो डेफिनेटली x भी 0 आ जाएगा, एंड दैट्स आल्सो वन परफेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन इन जनरल बात करें फॉर ऑल t, सो दिस एक्सिस के इसको थोड़ा सा रिग्रेसली हम इस तरह से सर्वे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस जो कि बुक में उसने किया हुआ है। आप डिफरेंशियल ले dx prime equal to alpha 1 dx plus alpha 2 dt, and then imagine a point in x prime which is fixed with respect to that coordinate system. For that dx prime is 0, but since it's moving in O, so you can find dx by dt is equal to 0. मेरे ख्याल में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, this complicates and this limit. x y और z spherical जो वेव है उसके भी कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ पे x equals to t, ये डिफरेंट एक्सेस है। तो ये इक्वेशन है x squared plus y squared plus z squared equals c t squared whole squared। इसका मतलब x y z जो है स्फेरिकल जो वेव है उसके कोऑर्डिनेट है ना, मतलब ये उस स्फीयर के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट पे। हाँ, लेकिन वहाँ पे x equals to t, हाँ वो डिफरेंट x होंगे, तो x डिफरेंट है जो यहाँ पे x equals to t x is equal to वो सिर्फ ओरिजिन वाला जो पॉइंट है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म so ये हमारे पास आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन, and actually they are perhaps the bedrock of everything that we do in relativistic electrodynamics, relativistic physics. You can drive all other transformations from these two things, or you can drive all other transformation of other quantities so that these transformations are preserved. So let's take a couple of examples of transformations that we can understand from these equations. Or just for completeness, inverse transformation. अगर आप x और t फाइंड करना चाहें x प्राइम और t प्राइम से, then you simply invert it. आप रिग्रेसली भी कर सकते हैं, आप आर्ग्यू भी कर सकते हैं, since prime coordinates are moving with speed u with respect to unprime. So इसका मतलब यह है कि unprimed are moving with respect to prime with speed minus u. So simply u को minus u से replace कर दें. So prime से unprime भी आप इस तरह से। और ये मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है जब मोशन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगर आपके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस अलाइंड हैं, x x के अलावा है, y y और z z के अलावा, लेकिन मोशन फर्स्ट करें जनरल, फर्स्ट करें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, और अभी हमने जो लिया था उसमें दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम u मूव कर रहा है। अगर इसकी बजाय वो u मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी है तीनों डायरेक्शन में, सो फिर क्या होगा, x के लिए यहाँ पे आ जाएगा ux, y के लिए y z uc, and I think टाइम के लिए यहाँ पे u ही रहेगा, where u is the net speed. Okay, but we will almost always be working with one dimension. जहाँ पे हमने 3 dimensions यूज करेंगे तो simply generalize from one dimension. Because all the physics is incorporated in these things. Yeah. अब जो है हम एक दो ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं जो इन लाउड ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर सकते हैं विद फिजिकल क्वांटिटीज and see what are the effects of special relativity on common things. So पहली चीज तो ये है, let's work out the length transformation. इसके लिए let's take again two coordinate system. जब हम कहते हैं कि ये coordinate system है जिसमें x, y, z और t है, what you should imagine in your mind is this.
कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि इसके अंदर हर पॉइंट जो है उसके साथ 4 कोऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड हैं, एक्स वाई जी जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस टाइम, एंड द टाइम एट ऑल पॉइंट्स इज द सेम। जो टाइम यहाँ पे है वही टाइम यहाँ पे है, वही टाइम यहाँ पे है, वही टाइम यहाँ पे है। ऑल if you imagine clocks attached to each point, all clocks are synchronized with each other. How do we do this? आप बहुत सारी relativity books में देखें, they go to very long lengths to tell different hypothetical procedures of trying to synchronize these clocks. So you send signal from here to here and back, but we are not going into those details. So important चीज़ ये है कि जब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, what you should imagine कि हर पॉइंट जो स्पेशल पॉइंट है उसके साथ एक क्लॉक भी अटैच है, and in one coordinate system all clocks read the same time. Say if all the clocks at all the points are synchronized, then why can't we just have one clock? क्योंकि जब हमने फर्स्ट करें यहाँ पे कोई इवेंट हुआ है, हमने उसकी अगर पोजीशन पढ़नी है अभी रीड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, लेकिन हमने ये भी देखना है कि किस टाइम पे हुआ है। अगर यहाँ पे कोई क्लॉक ही नहीं है तो हम टाइम का हमें कैसे पता चलेगा? बड़ा क्लॉक सो लेट्स से यहाँ पे बड़ा क्लॉक है, ये हम कैसे देखेंगे कि रिसेंट सम फर्स्ट पे हम देख ही रहे हैं। सो देखने का मतलब यही है कि यू आर सेंडिंग a light pulse there and a light pulse is coming back, then you have to know the distance and then वो इवेंट पहले हुआ था, तो जब उस इवेंट को टाइम असाइन करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए था, जो अपने क्लॉक पे जब देखा था 1 बजा है, तो जो जब आपको 1 बजा नजर आया तो असल में जो इवेंट हुआ था वो थोड़ा उससे पहले हुआ था, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगा है टाइम पढ़ते। Now the speed of light is finite, it's not infinite. That's actually the major difference between the classical and special. So अब ठीक है, this is also actually fine. If you know how to assign time to that event from this single clock, that's also okay. But actually अब बहुत सारी बुक्स में देखें तो जो क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने का तरीका ही है, you start with one clock and then by sending pulses and reflecting them you assign times to all the clocks such that at one instant of time they all read the same time. Similarly, in the other coordinate system, each spatial point has a clock and all clocks are reading the same time in this coordinate system, which in general may be different from this thing. That's okay. Okay, so before we now discuss what the length transformation is, that if length is measured in this coordinate and the length is measured in this coordinate system of the same thing, how did that length is transformed? But before doing that, let's just define what length is. फर्स्ट करें आपके पास एक स्केल, it has some two spatial coordinates, x1 x2. Length is usually taken as the difference between these two coordinates, right? And that's fine, except we now have to add one important thing to it, that these coordinates have to be read at the same time. That's the definition of length that we are going to use. x2 और x1 का difference length है, but the coordinates have to be measured at the same time. ये नहीं कि आप ये coordinate आज measure कर लें और ये कल आके measure करें और फिर कहें कि length जो है it's the difference. It's okay if this rod is stationary in your frame, but what if this rod is moving? So अगर आपने moving rod की भी जो है वो length measure करनी है अपने coordinate system में, then you have to make sure that you read the end points at the same time. So that's the definition of length that we are going to use. Okay, with this thing in mind, let's say we have something whose length is L prime
in this coordinate system. Usually जब भी हम बात किया करेंगे reference इस तरह से बनाया करेंगे कि we are in this coordinate system in O and O prime is moving with respect to us with speed u, and there is something that is happening here. We will always try to see how do we perceive that thing in detail. So to begin, let's say we have a certain rod of length L prime. This length is coordinate system में is x2 prime minus x1. So our objective is to find this thing in our coordinate system. So all we have to do is find these x2 and x1 corresponding to these x2 prime x1 prime, but we have to measure them at the same time. So which means that this x2 prime will be kappa x minus ut, and x1 prime will be okay. So अगर आप इस फॉर्मूले से x2 और x1 फाइंड करें, then you will measure the corresponding endpoints at the same time t in your coordinate system. So time is same, the x coordinates are. So which means that this length in that coordinate system इसमें से इसको माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेम पापा इसमें कॉमन आ गया x2 minus. So it means the length in our coordinate system is length in that divided by kappa. Kappa is 1 over that factoring square. ये वाला क्या? So ये ऊपर जाके जो है ये हो जाएगा 1 minus u square c square. रॉड है वो स्टेशनरी है O prime में. फिर आप ये लोअर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फिक्स लगा रहे हैं, लाइक x2 प्राइम के अंदर तो हमें पहली बात तो ये ध्यान में रखें, जब फर्स्ट करें ये इक्वेशन तो इसको ठीक है एट इनिशियल लेवल वी कैन परसीव इट एज going from xt to x prime t, but essentially it's equivalent. It's going from x prime t prime to xt, or it's going from here to here. It's completely equivalent. We cannot think of transforming one to the other. Essentially, this is just relating the coordinates in two coordinates, and both ways this is completely equivalent. ठीक है? हमने करना ये था कि इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हमने मेजर करना था अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बट एट द सेम टाइम. तो उसमें इन इक्वेशन को मैंने इसलिए यूज किया है कि इसमें जैसे इसको देखिए, इसमें टाइम आ रहा है, सो आई केप्ट द टाइम सेम इन बोथ. अगर मैं दूसरे वाला करता तो उसमें जैसे इनवर्स वाला तो ये t प्राइम उसके वाला है, तो उसमें टाइम सेम ही होना चाहिए. लेंथ की हमारे यहाँ डेफिनेशन ये है कि जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें मैंने किसी और चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, तो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम टाइम पे मैंने उसके एंड पॉइंट्स मेजर करने हैं. सो दैट्स व्हाई आई यूज दीस. ये लिटिल बिट ट्रिकी है शुरू. सर की जो टाइम फ्रेम है इसमें अगर लेंथ मेजर करें तो उसकी लेंथ जो भी आएगी, और अनप्राइम में हम करेंगे तो उसकी लेंथ छोटी आएगी. इससे यही लगे, क्योंकि आप देखें ये फैक्टर जो है स्मॉलर देन 1. सो जो लेंथ इसने मेजर की है जो हम परसीव कर रहे हैं स्मॉलर देन दिस. तो सर मतलब मैथमेटिक्स तो समझ आ गई, लेकिन इंट्यूटिवली मुझे नहीं नजर आ रहा है सॉल्व करके. इंट्यूटिवली आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? सर अगर कोई चीज तेज से जाए सामने मुझे लंबी नजर आ रहा है, मतलब सबको लंबी नजर नहीं आती. तो इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग. नहीं मतलब how do I, if
if you have to make the measurement, if OX is someone in OX is to make the measurement for the object moving in OX prime, how will he do that? How will he do that? अगर हमें तो पता है ना कि उसकी proper length OX prime coordinate system में L prime है, तो वो ट्रांसफॉर्म होकर L में ऐसे आएगी, मतलब L में ऐसे आएगी, like contracted length. लेकिन O वाला बंदा OX वाली length को कैसे मैनेज करेगा? OX prime वाली length को कैसे मैनेज करेगा? At from address. ऐसी है ना कि आपने असल में आप इसको ना यूँ समझ सकते हैं कि एक यहाँ पे रॉड है जो मूव कर रहा है, तो लेट्स से इस तरह से मेरी मेजरमेंट चल रही है, एक आप इस तरह नहीं कर सकते। क्या आप कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इधर ही है जिसको पता चलता है या तो किसी चीज़ का एज आया है या क्या है, तो ये रॉड यहाँ से गुजरेगा तो पहले इसको पता चल जाएगा एज जा, उस वक्त जो भी इस पॉइंट पे टाइम है आप वो कर लें सेव अपने पास और फिर वेट करें, जब दूसरा गुजरेगा उसका टाइम भी सेव कर लें, ठीक है। एंड यू नो दी टाइम डिफरेंस और आपको पता है इसकी स्पीड u है, तो आप u/t से भी लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप उसी से बिल्कुल मैच करें जो आप कहते हैं कि चीज़ गुजरे मुझे वो इस तरह से फील होती है, लंबी या छोटी है जैसे, और आपकी उंगली में एक्चुअली एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने आपसे कहा है कि आप इसी तरह से निकालें, and you will find that the length again comes out to be like this. Would be like this. Would be like this. It will be like this. क्योंकि जो टाइम है that is एक से दूसरे में जाते हुए जो टाइम है that is also changed. Okay, so जो यहाँ से दूसरे वाला पॉइंट है ना हम इस तरह से ले सकते हैं। Let's say we begin with this thing, and we say that we know that this rod is actually stationary in this coordinate system. अगर आप इस तरह से शुरू करें कि इसमें अगर लेंथ ये है तो what would be the length in this thing? जो दूसरा तो by symmetry भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं, but let's use these equation. तो आप कहते हैं कि आपको इस कोऑर्डिनेट का पता है, तो ये आपने फाइंड करना है, तो x2 x1 सेम टाइम, फिर x1 बट e प्राइम सेम रखना है आपने, क्योंकि आपने जब लेंथ इसमें मेजर करनी है द टाइम शुड बी द सेम फॉर बोथ कोऑर्डिनेट। और अगर आप ट्रांसफॉर्म करें तो यू विल गेट दिस। एक चीज आप देखें, ये फॉर्मूला इससे नहीं निकल सकता, ठीक है। ये बेसिकली आपको दे रहा है कि अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्टेशनरी लेंथ L प्राइम है तो दूसरे के अंदर जो लेंथ है वो क्या होगा, और ये आपको फार्मूला एग्जैक्टली वही चीज दे रहा है कि अगर इसके अंदर ये स्टेशनरी लेंथ L है तो दूसरे में लेंथ क्या होगी, क्योंकि ये u² आता है, सो बाय सिमेट्री वी शुड एक्सपेक्ट द आंसर टू बी द सेम। अगर जो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टेशनरी लेंथ है वो हमें छोटी लगेगी, जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टेशनरी लेंथ है उसको छोटी लगेगी, बिकॉज़ इट्स अ कंप्लीटली रिलेटिव मोशन। सो सिचुएशन सिमेट्रिकल है तो रिजल्ट भी सिमेट्रिकल होगा। सो दिस इज वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ Lahore transformation of special relativity, that lengths are concurrent. और with उसकी if you go into discussion and trace it back, it simply traces back to the speed of light. If you have infinite speed of light, if the c is infinite, you see the lengths in both coordinate systems are the same. Let's see how the time interval transforms. और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यही देख रहे थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें जो हासिल की है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर डेफिनेशन ऑफ लेंथ। हमने लेंथ को डिफाइन ही इस तरह से कर दिया था कि लेंथ डिफरेंस होगा टू कोऑर्डिनेट्स का अगर वो दोनों कोऑर्डिनेट्स एक ही टाइम पे मेजर किए। अगर हम ये एक ही टाइम हटा दें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ इन जनरल विल नॉट बी यूनिक, और अगर आप और रिस्ट्रिक्शन लगा लें then lengths would be different. Now time interval जो है उनके लिए the most appropriate
definition I think you can guess already, that at the same point, if you read time between two intervals, let's say एक इवेंट हुआ है तो सुई 12 o'clock पे है, उसी पॉइंट पे अगर दूसरा इवेंट हुआ है और सुई जो है वो 1 o'clock पे है, you can say the time interval is 1 hour. Both events can be taken to be some flashes or anything you like. तो अब इन दो इवेंट के दरमियान जो टाइम है वो अगर हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, and if we want to find the time interval, we have defined it to be something that happens the time between two events that happen in the same at the same point. So उसके लिए let's say तो कहें कि there is some interval t2 prime minus t1 prime, and we want to find the time interval between those two events in this coordinate system. Then we can actually transform it using, let's say, the second equation, that t2 prime is kappa ये जो टाइम सिस्टम है ये यूज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, राइट? this is going this way. So t2 prime is related to t2 with this thing, and t1 prime t1 minus t over c squared x. If we take the difference, then delta t prime is kappa delta t. दूसरी इक्वेशन भी हमें यूज करनी पड़ेगी. Let's say that this event is happening at, there's one event happening at t1 prime at some x prime, and then another event happening at t2 prime at the same x prime. So then this is the time interval in this thing. और अगर हमने इस coordinate system पे इस time interval को transform करना है, then x prime is same. X prime has to be kept the same, and t is different. So then for the first event, मैं आपको first कहीं करता हूँ. So x1 for the first is kappa x1 x prime plus u t1 prime. T1 is kappa t1 prime plus u over c square. ये फर्स्ट कर ले कोऑर्डिनेट्स का कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन कोऑर्डिनेट एक्स, वहाँ पे जो पहला इवेंट हुआ है t1 प्राइम एंड x प्राइम, उसके जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स होंगे दे आर x1 एंड
So x1 and t1 they are given by this, the inverse transformation. Now the second event जो है ये first है, जो second event है उसके x2 होगा पापा x prime plus ut2 prime t2 पापा t2 prime plus u over c square. और टाइम इंटरवल अगर हम उसमें निकालना चाहते हैं तो that will be t2 minus t1 is kappa t2 prime minus so इसमें ये हुआ कि यहाँ पे जो दो इवेंट्स के दरमियान में टाइम था that was measured by the observer in O to be this. और चूंकि यहाँ पे ये दोनों इवेंट एक ही पॉइंट पे हुए, इन जनरल उसके अंदर ये जो दोनों इवेंट है वो डिफरेंट पॉइंट पे होंगे, x1 and x2 will not be equal. क्योंकि x प्राइम सेम है, you can see अगर t1 और t2 different है, then x1 and x2 are going to be different. But the time interval that is read by an observer O is given by this. So this time is smaller than or larger than this time. ये है 1 over a factor smaller than 1, so this is larger than 1. So this is greater than So it means कि ये जो दो इवेंट्स हैं इनके दरमियान में जो टाइम इसने मेजर किया है इसके लिए वो टाइम ज़्यादा है, इसके लिए टाइम लो कम। और अगर आप डिवाइड करेंगे then you can also treat the same thing like that. So time is actually dilated. ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी तो यूज कर सकते थे, एक्सेप्ट के इस केस के अंदर हमने टाइम दोनों p प्राइम कोऑर्डिनेट्स दोनों के लिए सेम रखते थे और x प्राइम्स डिफरेंट थे, तो यहाँ पे हमने ये आइडिया एक्चुअली यूज किया। यहाँ पे आपने कहा कि हम लेंस मेजर कर रहे हैं तो हम अपने x को x1 को सेम रखेंगे, हालांकि किसी के किसी x को सेम लेंस मेजर करें तो t2 t1 यहाँ पे ये है कि अब एक इवेंट चूंकि यहाँ पे हुआ, and that event happened in the same place. तो उसका दरमियान में टाइम निकलता और उसका ये स्पेशल कोऑर्डिनेट सेम। इस वाले में ये है कि क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट हैं, you can measure them at different times, they are still going to be there. at different times in which way? in O prime, फर्क करें O prime के अंदर ये स्टेशनरी रॉड है, आप इसका मेजर कर लें क्योंकि ये इसके अंदर स्टेशनरी है, आप थोड़ी देर बाद भी ये मेजर कर लें, दिस इज स्टिल गोइंग टू। सो एसेंशियली इसको इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं x1 लिख लें, x1 प्राइम एंड t इज एनीथिंग, लेट्स से t1 कर दें, और इसके आप लिख सकते हैं x2 प्राइम एंड दिस टाइम कैन बी डिफरेंट बिकॉज़ दिस इज अ स्टेशनरी रॉड। ये प्राइम हो गई, t1 प्राइम। हाँ, ये दोनों प्राइम है और इन जनरल दे कैन बी डिफरेंट बिकॉज़ द रॉड इज स्टेशनरी, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर विच पार्ट। तो ये t1 t2 इन जनरल दे आर नॉट द सेम, लेकिन यहाँ पे हमने सेम रखने हैं क्योंकि इसके अंदर वो मूव कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंट टाइम पे मेजर करेंगे देन रिजल्ट विल बी डिफरेंट एंड डिपेंडिंग ऑन टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हाँ, तो यहाँ पे दोनों तरह से सिमेट्री से इस तरह की नहीं, क्योंकि इसमें ये है कि जब आपने जिसके अंदर स्टेशनरी है उसमें जब आपने टाइम मेजर डिस्टेंस मेजर करना है द टाइम डजंट हैव टू बी द सेम, दूसरे के अंदर टाइम है क्योंकि लेंथ इंटरवल वो है जिसमें ये देयर इज डिफरेंस, क्योंकि ये स्टेशनरी है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दिस पॉइंट यू आल्सो डिपेंडेंट।
जो बेसिक डिफरेंस इसमें और उसमें ये है ना कि हमने ये भी बेसिकली आप दो इवेंट ही समझे, एक ये इवेंट है और एक ये इवेंट, राइट। अब इसको इस इधर ट्रांसफॉर्म, उसमें भी हमने दो इवेंट को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन वो दोनों इवेंट में है वो सेम एक्स के ऊपर टाइम डिफरेंट। इसमें यह है कि दोनों का एक्स भी डिफरेंट है, इन जनरल टाइम कैन आल्सो बी डिफरेंट। So this is a different transformation. But even if you keep the time same, you should get different, right? Yes, but in general we don't have to make it the same. That is also one solution. इसीलिए ये जो time है ये transformation में कहीं यूज ही नहीं हुआ की time. So they are valid for the same and they are valid for the different. Because there is no restriction on t prime. उसमें हमने वो transformation यूज की है जिसमें there is restriction on x, क्योंकि हमने x prime को भी transform इस तरह करना है, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर x prime भी नहीं होगा, because x prime is the same in both transformations. इसलिए फैक्टर इधर आता है। तो पहले मैंने गलती से सब उसी तरह से कर दिया था, वो फैक्टर यूज कर रहा हूँ। So you have to be careful with the time measurement and the length. Any questions? बुक के अंदर 4-5 पेजेस की काफ़ी डिटेल इसको थोड़ा सा इंट्यूटिव करने की कोशिश की गई हुई है, जिसमें you don't get the numbers, but he tries to show why the lengths are shortened and times are dilated by trying to show you that operationally if we try to measure time or if we try to measure distance, we can, let's say, do it with sending speed of light signals, and then that's why since speed of light is finite, we get different reading in different quantities. So ये जो जैसे measurement बड़ी आप इसको यूं भी समझ सकते हैं। Let's say कि ये coordinate system इसके ऊपर से पास हो, यहाँ पे कोई इवेंट हुआ इसका at some t1 और इसका धारा कोई एक क्लॉक होगा जो यहाँ उस वक्त इसके ऊपर होगा, ओके। धारा ये भी कोऑर्डिनेट सिस्टम इंफिनिटी तक फैला हुआ, ये भी इंफिनिटी तक फैला हुआ, एंड देन ये क्योंकि ये इसके ऊपर मूव करता जा रहा है, तो ऐसे ही आप समझिए कि जैसे सीरीज ऑफ क्लॉक्स हैं वो इसके ऊपर से मूव करते जा रहे हैं, और जिस वक्त दूसरा इवेंट हुआ उस वक्त जो भी उसके सामने इसका क्लॉक था, अब जब पहला क्लॉक था पहले इवेंट उसका टाइम नोट कर लें, और जब चूंकि क्लॉक्स इसको गुजरते जा रहे हैं इसके जो ही दूसरा इवेंट हुआ है तो उस वक्त जो भी इसका क्लॉक था आप उस वक्त उसकी रीडिंग ले लें, एंड दोनों का डिफरेंस जो है दैट्स द टाइम, और you can see that both of those clocks are different positions because this is moving over it. So x1 and x2 don't have to be the same. Yes, x1 and x2 they actually cannot be the same. So the time interval here is such that the x prime is same in this one but not the other one. So these two are, you can say, the simple things, और इसको सब में हम डिस्कस भी करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स, इनको आप मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि let's say we have an atom which is radiating, but if the atom is moving at a fast speed, time उसके लिए different है, so it means same जो transition है उसकी frequency different होगी, because the time intervals are measured differently by someone in this frame and someone which is moving with respect to this frame. Sir, remind class. तो अगर यही आइडियल इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी, क्योंकि वैलिड तो डायरेक्ट इनवर्स दोनों ही होती है, दोनों ही आइडियल दोनों से, तो अगर हम यही टी वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनवर्स की वो अगर यूज़ करें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, तो अब in general तो ठीक है कि T1 prime and T2 prime do not have to be the same, but they can. They can. So if they are the same, then T1 and T2 will not be the same, right? Because x1 prime. अगर आप ये restriction लगा दें कि T1 prime and T2 prime are same, then T1 and T2 can't be the same. T1 and T2 cannot be the same. So we cannot do this if we. हाँ, तो essentially इसमें ये है, दोनों में अगर आप देखें तो फर्क क्या है,
जो लेंथ मेजर करने की डेफिनेशन है वो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट है। वहाँ पे टाइम इंटरवल मेजर करने की जो डेफिनेशन है वो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट है। असल में डिफरेंट इसलिए है कि एक ही डेफिनेशन दोनों में एप्लीकेबल नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे जो डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर तो आप स्टेशनरी हैं और जिसको लेंथ आपने मेजर कर दी है, देन आप लीनियर पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं एंड पॉइंट को मेजर कर लें एंड दैट्स योर लेंथ। और अगर कोई चीज़ जो है आपके सिस्टम में मूव कर रही है, then the definition of length is that you measure the end points at the same time. अब यहाँ पे ये है कि if the two events are happening in your coordinate system at the same point, then that's the time interval. And the time interval that is measured by the other somebody else is actually of different nature, because this is the time between two events that are not happening at the same point in this frame of reference. और actually I'm glad कि आपने ये दो क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि जब हम टाइम इंटरवल इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लफ्ज़ यूज करते हैं और इसमें यूज करते हैं, इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स ऑलटुगेदर। एग्री करते हैं? क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल का मीनिंग है कि टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, यहाँ पे टाइम इंटरवल का मीनिंग है टू इवेंट्स हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम। यहाँ पे लेंथ का ये मीनिंग है कि देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं एंड द पॉइंट्स आर फिक्स्ड, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बट हियर द लेंथ इज that there are two things जिनकी हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमने दोनों वो पॉइंट्स हैं वो मेजर कर रहे हैं एट द सेम टाइम। सो इसीलिए वी हैव टू टर्म्स फॉर लेंथ एंड टाइम। वी कॉल अ लेंथ अ प्रॉपर लेंथ अगर उसके जो एंड पॉइंट्स हैं दे आर मेजर्ड एट द सेम टाइम। वी कॉल अ टाइम इंटरवल अ प्रॉपर टाइम इंटरवल इफ it's a time interval between two events that happen at the same point. We call a time interval just time interval or non-proper time interval if it is the time between two events that happen at different position. Similarly, we call a length a non-proper length or just length if there is no restriction that the time is same for both. So there are two types of length and there are two types of time. Proper time interval, proper length, improper or non-proper, or just length and just time. Proper length इस केस में जो वो स्टेशनरी फ्रेम है वो मेजर कर रहा है और वहाँ पे प्रॉपर टाइम वो कर रहा है जो मूविंग, जिसमें वो दोनों इवेंट सेम हो, लेकिन वो मूविंग है, मूविंग है, लेकिन इसके लिए तो डजंट मैटर क्योंकि उसके दोनों इवेंट एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं। क्योंकि अब देखिए इसके अंदर जो हम टाइम इंटरवल मेजर कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फ्रेम, इट्स जस्ट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स एट द सेम टाइम। और इन जनरल जैसे कि आपने देखी है, a proper time interval in one frame cannot be proper time interval in the other, and that's how life is in special. And we will actually see in classical relativity time intervals and length intervals, they are conserved when you go from one to the other frame of reference. In the special theory of relativity, time intervals and length intervals, they are not conserved, they are different, simply because we cannot have a definition that covers, that applies in both coordinate systems. But there is something else which is conserved, and let's say call it somehow 1 t square. Proper length की definition में है length measured at the same time. जी जी। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं प्रॉपर लेंथ का बिल्कुल आपने सही कह रहे हैं। प्रॉपर लेंथ इज इफ इट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स when the events are happening at the same time. Okay? Proper time interval is the time difference between two events if the events are happening at the same point in space. But what if we measure the length of the object at the same time from the frame with respect to which the object is moving?
Although the length will be contracted, लेकिन by this definition we can still call it the proper length. कोई बात नहीं, you will have to see. हम देखेंगे अभी इसकी explain करेंगे. There are some events के यहाँ पे है कि they can either have a proper length or they can have a proper time interval. You can't have both. Contracted length या फिर proper length ये इसके यहाँ पे अगर प्रॉपर की बात करें, इसका प्रॉपर लेंथिंग और रेफरेंस पे, हाँ, O में तो contracted है. बेशक तो contracted is proper. फर्ज करें कि you don't know that there is any other frame of reference, forget O prime, forget these transformations. ये को भी भूल जाए, आप L prime पर भी ट्रांसफॉर्म ही ना करें. जस्ट एक रॉड है, वो मूव करता जा रहा है, आप उसके दो एंड पॉइंट जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स जस्ट सेम टाइम पे अपने सिस्टम में मेजर कर रहे हैं, you will find some length. You don't know it's contracted or not because there is no other reference where you are going to compare. लेकिन क्योंकि आपने जब मेजरमेंट की थी अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दोनों एट द सेम टाइम मेजर किए थे, इट्स प्रॉपर लेंथ. ठीक है. So what I was saying कि जिस तरह से देखें कि लेंथ्स और टाइम इंटरवल जो हैं they are not conserved. But there is something else which is conserved in special relativity, and that is this quantity, which I am going to call it tau, but you can just call it some interval. अगर आप कोई दो इवेंट को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्वांटिटी कंप्यूट करें या दें, उसको लॉरेंस से ट्रांसफॉर्म करें दूसरी वाली में, और उसके लिए भी यही क्वांटिटी मेजर करें, you will find this thing. You will see that they are both the same. दो इवेंट्स हैं x1 t1 and x2 t2. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो ये क्वांटिटी रिजल्ट देगी, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जैक्टली ये चेंज हो सकता है. तो हो सकता है ये नंबर इस नंबर से डिफरेंट हो और ये इस नंबर से डिफरेंट हो, बट दिस सम इज द सेम एज दिस. कुछ लेंथ जो है वो टाइम में सोर्स से, कुछ टाइम जो है वो लेंथ ये डायमेंशनली ठीक है. ये x over c है, it's time. नेक्स्ट में l स्क्वायर. This c है, just do it. Yeah. अब let's say proper time. Proper time हमने क्या define किया है? It's proper time if x1 is equal to x2, y1 is equal to y2, z2 is equal to z. So in case of proper time, this number is 0 in this coordinate system. And this is equal to this. अगर इस coordinate system में it's proper, in the other coordinate system this difference may be improper or non-proper. Because in general this is not equal to this, and actually it won't unless u is equal to 0, which means it's the same coordinate system. When u is not equal to 0, आप एक से दूसरे coordinate system में transform करेंगे. एक पे अगर ये non-zero है, ये 0 है, दूसरे में in general ये दोनों जो है non-zero. अब हम बात करते हैं, फर्स्ट करें कि दो इवेंट्स हैं, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट पे एक फ्लैश है, थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे एक फ्लैश है. These are two events. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो you can see that neither it doesn't have a proper time. इनका जो टाइम डिफरेंस है it's not a proper time, right? क्योंकि they are both happening at two different spatial. आपके ख्याल में क्या ऐसा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों इवेंट एक ही पॉइंट पे हुए? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो डिफरेंट पॉइंट पे हुए और डिफरेंट टाइम पे भी हुए. कैन देयर बी अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच दे हैपन एट द सेम? यस, इट्स पॉसिबल. नॉट ऑलवेज, बट समटाइम इट मे बी पॉसिबल. राइट? फर्स्ट करें
ये यहाँ पे हुआ है अभी कुछ, 5 मिनट के बाद यहाँ पे कुछ हुआ। All I have to do is have a coordinate system which is moving with such a slow speed that it takes it 5 minutes to go from here to here. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, अगर इसके ओरिजिन पे हुआ है तो इधर भी जाकर ओरिजिन की हो, या अगर यहाँ पे इसके x इक्वल 2 पे हुआ है इधर भी x2 पे वो इवेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे दो इवेंट्स थे कि ये किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके दरमियान में जो टाइम इंटरवल था इट कैन बी प्रॉपर टाइम। लेकिन फर्ज करें यहाँ पे कुछ हुआ है और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जस्ट 1 सेकंड के बाद कुछ हुआ, कैन देयर बी अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर ये दोनों इवेंट प्रॉपर टाइम इंटरवल के साथ हैं? नहीं, अभी it is possible, u is still possible, but let's say something is happening here and after 1 second something happened at sun. Light takes about 8 minutes to go from here to there. There cannot be any physical coordinate system in which the time interval between these two events is gone. So कब जो है दो इवेंट्स के दरमियान इंटरवल को हम प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, जब ये डिस्टेंस इतना हो कि स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड के साथ ट्रेवल हो सके। ऐसे ही है। दूसरे लफ्जों में when this quantity, so this is the time that you need to go from one point to other with speed c, right? ये x over c है। When this quantity is smaller than this, you can find a coordinate system in which this is 0 and only this is present. Right? And all you have to have is that your distance is smaller than ct, where t is this difference, which means that r over c has to be smaller than this. So this part has to be smaller than this. On the other hand, if this quantity is positive for two events, there can be a coordinate system in which both events happen at the same time and we can define a proper time between the two events. Remember, equal 0 wala bhi possible nahi hai. You cannot have a physical coordinate system in which can move with speed of light. For physical things, speed of light is smaller than c. So t1 tau has to be positive. From the same way, we can actually define another quantity epsilon 1 tau square. ये इसको भी थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया, दो क्वांटिटी रखी है ऑलमोस्ट एक ही चीज़ के लिए, इंस्टेड ऑफ just dealing with one thing, but because I want to follow the book, I will do this. अब इसको देखिए, this and this is almost the same, just written different. अब वही दो इवेंट्स देखते हैं, एक अब हुआ है, एक यहाँ पे थोड़ी देर बाद। तो अगर ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस से कम है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल किया जा सकता है, we can find a coordinate system in which both events happen at the same position. But now let's see if we want to find proper length. For proper length, this has to be 0. It means we have to measure two things at the same time. So again, अगर यहाँ पे कुछ होता है और यहाँ पे कुछ होता है, let's say अभी हुआ है और यहाँ पे 5 मिनट बाद, क्या क्या ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है जिसमें ये और ये at the same time इवेंट्स हो? ये इवेंट अभी हुआ है, ये इवेंट 5 मिनट बाद होगा। तो क्या ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है जिसमें ये इवेंट और ये इवेंट सेम टाइम पे हो? सेम टाइम पे मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी देर से हो रहा है, ठीक है, कि सेम टाइम पे होने के लिए जो टाइम डिफरेंस है वो अब लेट्स से कि मैं ये कैसे हुआ, आप यूँ कह लें क्योंकि ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल सेंटर पे है,
कि यहाँ से एक सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से या किसी खास स्पीड से आ रहा है और यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है किसी खास स्पीड से। तो अगर तो स्लो स्पीड से तो शायद कंसर्ट करना पॉसिबल हो सके। स्पीड ऑफ लाइट से देखें तो ये यहाँ तक जल्दी आ जाएगा अगर ये 5 मीटर की फासला था। So condition ये है, let's work it back. If this is positive, we can find a coordinate system in which this is zero. कैसे? जब ये positive है, it means the distance is greater than speed of light. So अभी हम वो सन में नहीं जाने देंगे। अभी यहाँ पे कुछ हुआ है और 5 सेकंड बाद सन पे कुछ हुआ। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पे जो है ना वो है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वगैरह से फ्लैश ऑफ लाइट उस तक पहुँचे। अब वो इवेंट बिल्कुल अभी हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कोई भी नहीं है जिसको फौरन पता चले, उसको वो इवेंट थोड़ी देर बाद ही पता चले। तो लेट्स से दिस इज कंटिन्यूइंग टू मूव और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहाँ पे पहुँच गया, उसने इतना डिस्टेंस तय कर ली है क्योंकि जो डिस्टेंस है इट्स ग्रेटर देन ct, जो स्पीड ऑफ लाइट से सिग्नल आ रहा है। तो ये मूव करता हुआ जा रहा है और उसको थोड़ी देर के बाद चूंकि वो वाला सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल पहले आ चुके हैं और वो कंडीशन ये है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू इवेंट्स it is greater than the distance that can be traveled by the speed of light. So let's say this is xt, x prime t. So for the events to happen at the same time, so अगर इनको हम imagine करें the clocks that were going along this, और एक इवेंट यहाँ पे हुआ है और एक इवेंट यहाँ पे हुआ है। तो जब पहला इवेंट हुआ है, फर्स्ट करें इसका कोई एक क्लॉक है यहाँ पे जो सम टाइम t पे वो इवेंट है। अब ये जो है ये इवेंट, ये डिस्टेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा है और ये इवेंट थोड़ी देर के बाद इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ये क्लॉक्स जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये उस पर तो काफ़ी देर के बाद पहुँचेगी। चलो इसको कल जो है ना परसों डिस्कस करेंगे उसी